Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. In this class, we will discuss about sulfonamides. So basically, sulfonamides are the first antimicrobial agents. तो सल्फोनामाइड जो है फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं इफेक्टिव अगेंस्ट पायरोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शंस. And sulfonamides are antibiotic that have structural similarity with para-aminobenzoic acid. जो सल्फोनामाइड्स है उसकी सिमिलैरिटी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है किसके साथ, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की, कंटेनिंग सल्फोनामाइड ग्रुप्स इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. दे हैव बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So this is the basic moiety of sulfonamides, structure feature of sulfonamides. Now the classification of sulfonamide. The classification contain short acting, intermediate acting and long acting. Short acting contains sulfadiazine and intermediate acting may contain sulfamethoxazole and long acting sulfadoxine and sulfamethoxypyrazine. And special purpose just like sulfacetamide sodium and sulfasalazine, sulfur sulfadiazine and mefenide. So this is the classification of sulfonamides. ये सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम टैबलेट यूएसपी 100 mg पर 100 mg. सो ये है सल्फामिथोक्साजोल. सो बेसिकली सल्फामिथोक्साजोल क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फाडायाजिन टैबलेट आईपी 500 mg. सो सल्फाडायाजिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग एंटीबायोटिक्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स. सो जो सल्फोनामाइड्स हैं फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ sulfonamides. How sulfonamide act? Many bacteria synthesize their own folic acid. Many bacteria synthesize their own folic acid, of which para-aminobenzoic acid is a constituent. Sulfonamide, being structural analog of PABA, inhibit bacterial folate synthesis so that folic acid is not formed and a number of essential metabolic reactions suffer. So basically PABA plus glutamate plus pyridine converted into dihydrofolic acid in the presence of dihydrofolate synthetase. So basically sulfonamide is similarly structured like PABA, so it interrupts the synthesis of folic acid and a number of essential metabolic reactions suffers. So this is the mechanism of sulfonamide. Now we will discuss about the uses of sulfonamides, antimicrobial agents. First of all, sulfadiazine preferred compound for meningitis में यूज होती है. sulfamoxazole for UTI. UTI means urinary tract infections. Next is sulfadoxine plus pyrimethamine, malaria treatment, used in malarial treatment. Sulfadiazine plus pyrimethamine used in toxoplasmosis. सल्फासिटामाइड ट्रीटमेंट ऑफ ओक्यूलर इन्फेक्शन, मीन्स अगर आपको कोई ओक्यूलर इन्फेक्शन है तो उसमें हम सल्फासिटामाइड यूज करते हैं. मेफेनाइड एंड सिल्वर सल्फाडायाजिन यूज इन बर्न पेशेंट्स. So this is all about the uses of sulfonamides. Now we'll discuss the adverse effect of the sulfonamides. Nausea, vomiting and epigastric pain. Crystalluria in dose is dose related but infrequent. Now hypersensitivity reaction occur in 2 to 5% patients. These are the mostly in the form of rashes, urticaria, fever, and Steven Johnson syndrome is the most important
Adverse effect of sulfonamides: exfoliative dermatitis, hepatitis, keratosis may be precipitated in the newborn. So this is all about the sulfonamides. Thank you students. ऐसी more informative videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. Thank you.